Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of BS English Language and Literature. We are going to discuss Waiting for Godot. That is a modern drama paper and it's Unit 8. Waiting for Godot जो ड्रामा है इसका जो राइटर है सैमुअल बकेट है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और साथ ही एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर हम राइटर के बारे में देखें तो सैमुअल बेकेट 1906 में ही वाज बोर्न एंड 1989 में इसकी डेथ हुई। आयरिश प्ले राइट है, नॉवेलिस्ट है, पोएट है और बड़ा इन्फ्लुएंशियल राइटर है 20th सेंचुरी का। ही रोट द प्ले ओरिजिनली इन फ्रेंच। ये जो ड्रामा है वेटिंग फॉर गोडो इसने ओरिजिनली फ्रेंच में लिखा, जो कि बाद में लिखा 1948 में, जो कि बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ। सैमुअल बकेट को नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1969 में दिया गया। ठीक है, इसका ये जो काम है, ये जो ड्रामा है, ये एक्सप्लोर करता है मीनिंगलेसनेस और लोनलीनेस के थीम को, जो कि ह्यूमन कंडीशन, इंसानी कंडीशन है। ठीक है, अगर हम इस प्ले का, इस ड्रामे का ओवर व्यू हम अगर करें तो इसमें एक कैरेक्टर, अगर हम कैरेक्टर्स को देखें तो व्लादिमीर एक कैरेक्टर है, दूसरा एस्ट्रेजन है, तीसरा पोजो है और लकी। ये चार मेन कैरेक्टर हैं और द बॉय एक माइनर कैरेक्टर है। व्लादिमीर जो है एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है, थॉटफुल पर्सन है। एस्ट्रेजन जो है, ठीक है, इसको अपनी फिजिकल नीड्स की ज़रूरत, मतलब उससे कंसर्न्ड है और ये फॉरगेटफुल मैन है। पोजो एक वेल्दी लैंड ओनर है, बड़ा एरोगेंट भी है। ठीक है, और ये जो लकी है इसको अपना सर्वेंट समझता है। ये जो बॉय है जो आकर बताता है कि गोडो आएगा या नहीं। पूरा ड्रामा जो है ये नथिंगनेस पर बेस करता है। हम देखें तो ये ड्रामा ट्रेजिक कॉमेडी है। ठीक है, और ये जो प्ले है ये एक लोनली कंट्री में है जहाँ पर एक ही दरख्त है। ये जो ट्रैम्प्स हैं, टू ट्रैम्प्स यानी आवारा जो हैं, व्लादिमीर और एस्ट्रेजन, ये बड़े एक बंदे का वेट कर रहे हैं, एक गोडो का वेट कर रहे हैं। मिस्टीरियस पर्सन जिसका नाम गोडो है, जो कभी नहीं आता। पूरे प्ले में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल, और यही इसी तरह ड्रामा जो है ये ख़त्म हो जाता है। इसका जो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड यानी एब्सर्डिस्ट ड्रामा है। यानी इसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी जो है ये मिक्स है और पॉइंटलेस एक्टिविटीज़ हैं, रिपेटिटिव नेचर है ह्यूमन लाइफ की इसमें। अब मेजर इसके थीम्स देखें तो वेटिंग है, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ है, एग्जिस्टेंशियलिज्म इसमें है कि इंसानी ज़िंदगी, इंसानी वजूद का कोई मकसद नहीं है। फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप की बात है, होप एंड डिसअपॉइंटमेंट की बात है। इम्पॉर्टेंट मोटिव्स में वेटिंग, रेपिटिशन, साइलेंस, डिसीजन टू लीव, द बॉयज मैसेज है। और सिंबल गोडो जो है वो होप का सिंबल है। द ट्री ये भी होप का सिंबल है। रोड जो है लाइफ के जर्नी को जाहिर करता है। बूट्स जो हैं वो फिजिकल सफरिंग को जाहिर करते हैं। रोप जो है वो स्लेवरी की अलामत है। ठीक है, तो कंक्लूजन में इसका क्या है कि प्ले में कुछ होता ही नहीं है। जैसे देखें, लेट्स गो, वी कांट, वाई कांट, वी आर वेटिंग फॉर गोडो। और जिसका वो वेट कर रहे हैं गोडो का, वो पूरे प्ले में आता ही नहीं है, प्ले के एंड पे भी नहीं आता। सो नथिंग हैपन्स इन द प्ले। तो हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। Waiting for Godot is one of the greatest plays of 20th century and is considered a masterpiece of the theatre of absurd. Who is the writer of the play? प्ले का जो राइटर है वो कौन है? तो सैमुअल बकेट इसका राइटर है। Samuel Beckett was a renowned playwright, novelist, and poet who received Nobel Prize in Literature. In which year was he awarded the Nobel Prize? 1969 में। Although Samuel Beckett was Irish by birth, he wrote Waiting for Godot in another language before translating it into English.
Which language was it? तो ये ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया. Waiting for Godot is regarded as one of the finest example of a particular dramatic movement that emphasizes the absurdity of human existence. It belongs to, ये किस के साथ बिलोंग करता है, किस के साथ, ये जो absurdity of human existence है, ये theater of absurd में होता है. The play mainly revolves around two tramps who spend their time waiting for someone who never arrives. Who are these two main characters? ये Vladimir और Estragon हैं. Throughout the play, Vladimir appears to be more thoughtful and optimistic than his companion. What is Vladimir nickname? Vladimir का nickname डीडी है. Estrogen is often worried about his physical suffering, especially his boots and tiredness. What nickname is used for estrogen? Go Go. Lucky remains completely obedient to his masters and carries heavy luggage throughout the play. Who is Lucky's master? Lucky का master Pozo है. Pozo is introduced as a wealthy landowner who treats his servant in a harsh and controlling manner. Which character does he dominate? Lucky. A young boy appears at the end of the act to deliver an important message to Vladimir and Estragon. What does the boy tell them? Godot will come tomorrow. कि Godot कल आएगा. The title of the play creates curiosity because the person for whom everyone waits never appears on the stage. Which statement is correct about Godot? He never appears in the play. Play में वो आता ही नहीं है. The central action of the play is based on waiting, uncertainty, and hope. Which theme best represent the play? Waiting and meaninglessness of life है इसमें. Many critics believe that Waiting for Godot explores human search for purpose in an uncertain world. Which philosophical movement is most closely associated with the idea existentialism? कि अपनी जिंदगी के मकसद को, अपने वजूद के मकसद को तलाश करने की कोशिश करना एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी में आता है. The conversation between Vladimir and Estragon often seem repetitive and without clear purpose. The technique mainly reflects the absurd nature of human experience, या human existence. Although Vladimir and Estragon repeatedly decide to leave, they never actually move from their place. The action mainly symbolizes human indecision and inaction. Friendship is one of the important themes of the play because the two main characters continue to support each other despite their hardship. Which pair best represents this friendship? Vladimir and Estragon. The repeated arrival of the boy with the same message emphasizes the idea that hope is always postponed. The recurring idea, जो बार बार एक आइडिया आ रहा होता है, वो मोटिव होता है. The lonely tree standing on the stage changes slightly between the two acts by growing a few leaves. The tree mainly symbolizes hope and passage of time. Boots are repeatedly mentioned in the play, especially by Trajan, to highlight physical discomfort and suffering. The boots primarily symbolize human suffering and daily struggle. Literary critics generally agree overall message of Waiting for Godot that human beings continue searching for meaning despite uncertainty and disappointment. Which statement best describe this message? Life is uncertain, yet people continue to hope. Throughout the play, Pozzo considers himself superior to Lucky and exercises complete control over him. Pozzo mainly symbolizes authority and power. Lucky delivers a long and confusing speech that lacks logical order and coherence. This speech mainly represents the breakdown of logical thinking.
In Waiting for Godot, silence appears repeatedly between conversation and actions. These moments of silence mainly suggest emptiness, isolation, and uncertainty. Although the play contains many humorous moments, they often reveal the sadness and helplessness of human life. The combination of comedy and tragedy is known as tragic comedy. The setting of Waiting for Godot is simple with a country road, Dehati Sadak, and a single tree. The barn setting mainly symbolizes emptiness and isolation. Beckett, yani Samuel Beckett, intentionally avoids providing detailed information about time and play in the play. The technique mainly emphasizes the universality of human experience. Vladimir often remembers past events more clearly than Estragon, who frequently forgets them. This contrast mainly highlights the theme of memory and forgetfulness. The repeated action of the waiting without achieving anything mainly reflects the repetitive nature of life. Critics often describe Godot as a mysterious figure whose identity is never revealed. Godot is commonly interpreted as a symbol of hope or search for meaning. The relationship between Vladimir and Strajan continues despite arguments, misunderstandings. This relationship mainly reflects human companionship and dependence. Lucky is tied to Pozo with a rope throughout throughout much of the play. The rope primarily symbolizes slavery, dependence, and control. The characters frequently discuss leaving the place but remain where they are. This repeated action is best described as inaction and paralysis. The few leaves that appear on the tree in the second act suggest that even in despair, there is still a slight possibility of hope. Samuel Beckett uses simple language and repetitive dialogue to emphasize the absurdity of human existence. This technique is a characteristic feature of absurd drama. The inability of the characters to understand one another completely reflects the theme of failure of communication. The play ends almost in the same way as it began, suggesting that life continues in an endless cycle of waiting and uncertainty. Many critics believe that Beckett intentionally leave the identity of Godot unexplained in order to allow different interpretation of the play. The title Waiting for Godot itself emphasizes the importance of waiting as the central action of the play. The overall structure of Waiting for Godot is unusual because very little external action takes place. This dramatic technique mainly focuses on psychological and philosophical ideas. Waiting for Godot remains one of the most influential drama plays because it explores universal question about life, hope, and existence. The play is best classified as absurdist play. So, student, that was our lecture based on the summary of the play and MCQs of the play. In the next lecture, we will discuss in detail the long questions, all the topics of the drama. Thank you very much.